Glory International University honors global talent with honorary doctorates. Dubai. Glory International University, GIU. Originally based in the United States of America. Proudly recognized eminent personalities from diverse fields worldwide with esteemed honorary doctorates at a grand ceremony held at Dusit Thani, Dubai. The distinguished jury panel, comprising Professor Pale Sansan Herman, WAY Director to Africa, Dr. Nasser Suleiman, the university's National Director of UAE, Dr. Abdullah Ali Salem Al-Mubarak, Dr. Anwar Al-Yassiri, Dr. Mohamed Al-Wadia and Dr. Munir Ahmad, bestowed the coveted honorary doctorates upon 18 deserving awardees hailing from nations including the UAE, India, Pakistan, Ivory Coast, Nepal, Canada, Egypt, Turkey, among others. The honorees represent a spectrum of disciplines encompassing social service, business law, management, literature, arts, business administration, journalism, media communication and telecommunications. Professor Pale Sansan Herman shared insights into GUI's journey of evolution since 2015, highlighting the university's burgeoning global stature. Additionally, he outlined the institution's forthcoming plans to establish operations in the UAE as its third base after the USA and Burkina Faso. Dr. Nasser Suleiman, the UAE director of the university, commenced the ceremony with a warm welcome speech, setting the tone for an evening of recognition and celebration. He concluded the event with a Je suis le professeur Pale Sansan Herman, le président Afrique de l'université Glory International University. Et ce soir, nous sommes très contents pour cette grande cérémonie de distinction à ces personnalités qui ont eu à marquer leur temps et leur contribution au sein de la nation et sur le plan international. Ce qui fait l'une des missions de Glory International University afin de valoriser et de reconnaître leur contribution. Je vous remercie. Good evening, I am so happy here. हम लोग को इतना अच्छा अवकाश दिया था ग्लोरी यूनिवर्सिटी, यहाँ आने के लिए हम बहुत धन्यवाद है। यहाँ यूनिवर्सिटी का तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद है और हमको ऐसा चांस मिला है। ये चांस सभी को मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये आके हम लोग को ये एक इंस्पिरेशन मिलता है। ये इंस्पिरेशन से हम लोग और आगे बढ़ने का चांसेस है। अभी तक हम लोग बहुत कुछ किया है, अभी आगे और कुछ करने का चांसेस मिलेगा। भगवान का वजह से सब अब अपना इंडिया में कोई गरीब नहीं होना चाहिए। Evening today with our doctorate awardees being present and receiving the honorary doctorate from Glory International University. It has been a fantastic event. Besides the fact that the selection by the jury was amazing, the people were very well deserving, and it's been a lovely, lovely experience being here in the evening and meeting everybody. Glory is fantastic, and I think it rocks. So do the juries. We are honored, truly honored. Thank you so much, Glory. Thank you. My name is Khaja Abdul Mutallib. I am really thankful to the Glory International University for appreciating the real talents and awarding them the doctorates. Thank you so much, and thank you to my good brother, Dr. Munir Ahmad, for inviting me to this Glory International University. Thank you so much. Thank you. Je suis Diomané Madou, directeur général de la SOGEDI en Côte d'Ivoire. Nous sommes à une cérémonie solennelle et mémorable de gradation des docteurs nourrices de l'université Gloria. Et je me réjouis d'être là aujourd'hui parmi les nominés et d'être leur porte-parole. Je voudrais remercier sincèrement l'ensemble des dirigeants de l'université, avec les professeurs, pour cet honneur qu'ils nous font, de nous choisir parmi toute cette pléthore de compétences qu'il y a sur l'Afrique, qu'il y a sur le monde, que nous sommes entièrement honorés. Et je voudrais souhaiter que tous ceux qui ne connaissent pas cette université apprennent à, partager ses valeurs et à faire en sorte que Gloria Université soit l'université de référence que nous connaissons. Thank you. Thank you very much for coming on behalf of Glory University, California and Dubai. We thank you for coming, and we are happy to organize the second ceremony of granting doctors. So we have in the future
more surprises, to make more added value from our benefit of our experience from the university, and will add value to our community together with the best network and experience. Thank you very much indeed. Glory University is a USA-based, very old university, tradition into many different faculties, and today we awarded more than 16 people to honorary doctorate in social sciences, investment, finance, and business administration. So really, from my heart, I love to congratulate all honorary doctorate. Je suis Nguessa Kofinikez. J'ai été très honoré. Je voudrais dire merci au président du jury et à tout son staff pour cette grande marque de distinction et féliciter tout l'ensemble de cette corporation et dire que International Glory School est une meilleure école et que ça forme des meilleurs. Soyez bénis. I am Professor Sekongo Yassoni Mamadou from Côte d'Ivoire, Ivory Coast. It is a pleasure for me to be honored by the jury of this award. I would like to thank Glory International University and all the authorities of Dubai because I contribute to do this ceremony a very good ceremony, and thank you for all the people who are contribute for the development of people through away the world. Thank you. ये माशाल्लाह हमारा दूसरा इवेंट है, तो पहले हमारा फेयरमाउंट में एक इवेंट हुआ है फिल्म के बारे में, तो अब ये दूसरा डॉक्टर मुनीर साहब की तरफ से मैं एक आज आपको डिग्री भी मिली है, तो इस हवाले से क्या है? बस थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्लोरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड अस डिग्री एंड वेरी ऑनर. थैंक यू. ये हमारा दूसरा एडिशन है ग्लोरी यूनिवर्सिटी, जो कि USA से है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, एंड इट इज़ आवर सेकंड एडिशन हेयर to celebrate and to honor doctorate more than 16 people. So ये सिलसिला जारी रहेगा और ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मीडिया का भी बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद मैं देता हूँ जितने लोगों ने they get certificate, doctorate, honorary in social sciences, in business administration, in investment, finance, and different. So to all, I would love to give a congratulations.